ठीक है, हम फर्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हो मुझे? जी सर। Okay, so the last time we started the chapter about the antibodies. Actually, antibodies. We were more interested in how antibodies are produced and what is the chemical structure and what are the types of antibodies. Um, Last time we observed that the antibodies are tetramer. Two light chains are there in the antibodies and two heavy chains are there, and I already told you that the light chains are 25 kilodalton almost, and the heavy chains are almost 55 kilodalton, right? Last time I wrote on the slides. So, and you can see there is two arms, and the edges of the arms are those variable regions that bind to the antigen because of their specificity with the antigen. So these are the darker color edges of the arms are the antigen binding sites of the antibodies. And I already told you these darker this region is called the FAB region, and you can see the stem like looking region of the antibody. I'm talking about IgG antibodies are the FC regions, and these FC regions are important in awakening the immune response. Okay, this is another structure of antibody. Okay, whenever antibody bind to the antigen, there are some changes in the FC region, and there becomes one loop available that start actually the complement cascade to wake the immune response. There are some changes in the FC region. This bottom one, the stem one region, is called the FC region. So there are some changes on the both of the heavy chains of the antibody, and you can see here the antigen binding region of the antibodies has been shown here with the bit darker color. Okay, last time we talked that one antibody can bind two antigen if we talk about the IgG antibody, but the pentameric antibody like IgM antibody can bind to the 10 antigens. We talked already about the types of antibodies last time, and we saw that the IgG antibodies that are present from 70 to 85% of the total antibodies are IgG in nature in our body. IgG are 70 to 85% of the total antibodies. So that's why we are more interested in many times about the IgG antibodies. And IgG antibodies awake the specific immune response, the adaptive immune response. That's why we are more interested in many time. Sorry. मैं एक्सेप्ट कर लूं बच्चों को एडमिट ऑल, या किसी और स्टूडेंट के पास भी एडमिट की है पावर तो वो एडमिट कर सकता है ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े. ओके, we saw last time the types of antibody: IgG antibody, IgD antibody, IgE antibody, and IgA antibody are in the form of dimer, and IgM are the pentameric antibodies. So some of the characteristic of polyclonal and monoclonal antibodies, because this is included in the content of this topic, that we have to talk about the polyclonal and the monoclonal antibodies. These properties have already been discussed. The polyclonal antibodies are easy to produce. Simply we have to inject the antigen into the body of the animal. For example, we have antigen, some protein like 4EBP1 protein we do have, and this is purified protein, for example, is injected into the mouse body through the IP injection, intraperitoneal injection, and this protein acts as an antigen and the antibodies are produced, and usually the antibody production, the IgG, usually takes the 14 days. We have already talked in detail while taking the example of corona that the antibody production, the adaptive immune system requires 14 days to produce the immune response in case of new antigen. If the antigen is the body is already introduced with this antigen, then the immune response will take only 2 to 3 days, but for the new antigen it will take 14 days. So in the case of corona, if the patient is treated depending upon the symptoms of the patient and it survives for 10 to 14 days, then it becomes easy to
save the patient if not much of the lung damage has been occurred, because after 14 days the adaptive immune system will complete its cycle and the antibodies IgG specific for the coronavirus will be produced. So we took these examples last time. So the monoclonal antibodies, definitely, if some of the antigen is introduced into the body, the polyclonal antibodies are produced because many clones against different parts of the antigen are produced, and they are producing the different antibodies. And what the monoclonal antibodies then? Monoclonal antibodies are usually produced in vitro by the hybridoma technology. Uh, we already talked. This is the strategy to produce the polyclonal antibody, and the serum that will be produced after the injection of the antigen will be containing the polyclonal antibodies. And this is the response. This is the primary response. This is the primary response. Primary response means the first dose of the antigen has been given to the animal, and this is the secondary response. Secondary response is much more pronounced as compared to the primary response. And this is the strategy to produce the monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies are produced first of all by cloning the gene of interest against which we want to produce the monoclonal antibodies. बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है. ओके ओके ठीक है ठीक है अच्छा ओके. And first of all, those antigens are isolated after being expressed into the bacterial cell. For example, let me accept some of the students. Let me check if some students are waiting. One is waiting. किसी को रिमूवल का तो नहीं मसला पेश आ रहा कि रिमूव हो रहा स्टूडेंट खुद ब खुद, ऐसा तो नहीं है? सर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम मैंने ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लें अगर हो पॉसिबल है तो. हाँ 5 मिनट वेट कर लेते हैं, हम रुक जाए 5 मिनट इधर. जी अगर काइंडली हो जाए तो. हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ. स्टॉप रिकॉर्डिंग. मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ना स्टार्ट. तो सॉफ्ट कॉपी नहीं आपके पास? सॉफ्ट कॉपी चलो कोई बात नहीं, पर ठीक है. अच्छा आपको स्लाइड नजर आ रही है बच्चों? जी सर. यस सर. अच्छा ठीक है. तो हमने लास्ट टाइम चूंकि ये सारी चीजें ज्यादातर पढ़ी थी, एक और दो चीजें मैंने नहीं बताई हैं और एक दो चीजें नहीं भी बतानी मजीद भी हैं. तो जिन्होंने मिस कर दिया कोई ऐसा मसला नहीं है, तो हम हमारे वो साथ ही हैं, वो देख चुके हैं इन चीजों को. तो हमने क्या किया जी, हमारे पास एक प्लाज्मिड है जो बैक्टीरियल एक्सप्रेशन प्लाज्मिड होता है, वो पेट 32 होता है आमतौर पे. ये पेट 32 लिखा देख रहे हो आप. तो उसमें एक प्रमोटर होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है. जिस प्रोटीन का हमने एंटीजन को एंटीजन के तौर पे लेना है, उसको तैयार करना है, हम उसका कोडिंग सीक्वेंस ले लेते हैं. जिस तरह मैंने 4EBP1 की एग्जांपल दी, कोई भी LC3 प्रोटीन भी हो सकती है, कोई भी BS से भी हो सकती है, कोई भी प्रोटीन हो सकती है. तो आप क्या करोगे, क्या आप जो है ना MCS जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है वहां पे उसको कोडिंग सीक्वेंस जो है क्लोन करोगे, और जो क्लोन करोगे वो डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रमोटर होगा. वो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रमोटर होगा. चूंकि ये बैक्टीरियल एक्सप्रेशन प्लाज्मिड है, तो इसको बैक्टीरिया में आप ट्रांसफॉर्म करोगे विद दिस प्लाज्मिड, एंड बैक्टीरिया विल बी कंटेनिंग मेनी कॉपीज ऑफ दिस प्लाज्मिड. एंड बिकॉज दिस इज एक्सप्रेशन प्लाज्मिड, the plasmid will express the proteins, and the cell will be lyzed to obtain the express proteins. Express proteins is that protein for which to which we want to use as an antigen. तो सेल लाइसेट को हम क्या करेंगे, सेल लाइसेट को हम प्यूरिफाई करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हम उसको चेक करेंगे कितना एक्सप्रेशन आया है. फिर हम उस एक्सप्रेशन अगर हाई होगा हमारी प्रोटीन का, तो हम उसको कॉलम की मदद से हम सेपरेट आउट कर लेंगे. कॉलम की मदद से सेपरेट आउट कर लेंगे. आमतौर पे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है किसी खास प्रोटीन को अलग करने के लिए, किसी खास एंटीजन को अलग करने के लिए. और आमतौर पे हम हिस टैग को अटैच कर देते हैं. हिस टैग को अटैच कर देते हैं किसके साथ कर देते हैं? हम प्रोटीन के साथ अटैच करते हैं, या तो इसके सी टर्म पे कर देते हैं या फिर एन टर्म पे कर देते हैं. तो कॉलम जो है ना वो हिस
टैग के लिए एफिनिटी रखता है, and all the proteins that is containing his tag will be attached to the column, and rest of the protein will be eluted out, and at the end by the change of the pH of the buffer you elute the protein of your own interest that was attached previously along with the his tag. जब आपने प्योर एंटीजन ले लिया तो फिर प्योर एंटीजन को आप आईपी इंजेक्शन लगाते हो, आईपी इंट्रापेरिटोनियल, जो बेली में इंजेक्शन लगाया जाता है उसको आईपी इंजेक्शन बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, लेकिन आईपी इंजेक्शन से अच्छा टाइटर आ जाता है एंटीबॉडीज का। आईपी इंजेक्शन अच्छा खासा इफेक्टिव है, तो हम आईपी इंजेक्शन लगाएंगे माउस को फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि उसके अंदर डेफिनेटली वो सारा का सारा इम्यून रिस्पॉन्स अडेप्टिव वाला सिलसिला चलेगा और वो 14 दिन का होगा। डेफिनेटली हम 10वें दिन के बाद जो है ना उसको सेकंड डोज लगाएंगे जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे सेल जो होंगे दैट विल हैव द memory of that antigen, that will be the B cell that are called the plasma cell will be produced। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल जब बन जाएंगे तो प्लाज्मा सेल आपको पता है कि ये जो है जब तक ये दे आर अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द स्प्लीन, दे आर अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द स्प्लीन। ठीक है, कौन? ये जो प्लाज्मा सेल जिनके अंदर मेमोरी है, जिन्होंने अपना जीनोम इस तरह चेंज कर लिया है कि जैसे ही इनको सिग्नल मिलेगा तो ये फटाफट अपने जीनोम की मेमोरी की बुनियाद पे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये स्प्लीन में स्टोर होते हैं। स्प्लीन को फिर हम लेते हैं, उसको चॉप करते हैं और उसको हम सीव में से गुजारते हैं, जाली जिसको कहते हैं, छलनी कहते हैं जिसको, उसमें से गुजारते हैं और स्प्लिनोसाइट हम हासिल कर लेते हैं और हम उसको मीडिया में ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्प्लिनोसाइट। These splenocytes are primary cells. These splenocytes are primary cells. They cannot grow further than 4 to 5. 4 to 5 जो है ना ये सब कल्चर से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। 4 से 5 से 6 से दफा ज्यादा ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दे विल सफर फ्रॉम सेनिसेंस, वो सेनिसेंस का शिकार हो जाएंगे। They do have the ability to produce antibodies, but they cannot grow for unlimited number of times। तो क्या इनको हम immortal करने के लिए, these are mortal cells, primary cells are mortal cells, to make them immortal we mix these plasma cells, the B cells, with the some cancer cell line, the tumor cells। Usually we use the myeloma cells, usually we use the myeloma cells to mix it with the B cells। जब ये दोनों को सेल्स को मिक्स किया जाता है तो हम वहां पे पीईजी की मदद से हम करते हैं। पीईजी मीडिया का होता है, पीईजी होता है मीडिया में, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिया में होता है, उसमें बी सेल भी डालते हैं। ठीक है, और उसमें हम ट्यूमर सेल भी डालते हैं, उनकी खास स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो सम ऑफ द सेल्स आर मिक्स्ड दैट आर कॉल्ड द हिब्रिडोमा सेल्स, बिकॉज दीज आर द, some people say myxoma cells, but these are in the literature called the hybridoma cells। These hybridoma cells are screened with the head selection media, all the cells that are either the tumor cells or whether the B cells are killed, but only the hybridoma cells can survive in the head media, only hybridoma cells can survive in the head media, and they are grown for several days, and each single clone is picked and is put into a different well of the 96 well plate। After they grow in the 96 well plate, we pick the each clone and make their large culture cells from each of the well, that is actually the monoclone is taken and is grown at large scale पे जब grow करते हैं they produce antibody that is excreted in the media, they produce antibody that is excreted in the media, and these antibodies correspond to a single clone, that's why they are called the monoclonal antibodies। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी हम तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो वेरिएशंस हैं आईजीजी एंटीबॉडीज में, जिसमें एफसी है, ठीक है, मिनी एंटीबॉडी भी है, एससीएफवी जिपर है, ठीक है, डाई एंटीबॉडी है, एससी फैब है, अकेली फैब है, एससीएफवी है, और ये वीएच एंटीबॉडी है। लेकिन सब में एक बात याद रखिएगा, इसमें जो रिकॉग्निशन रीजन है, द वेरिएबल रीजन है, दे आर ऑल हैविंग the variable region, but the constant region is somewhat deleted in several antibodies, and they do have the different variations of their constant region। Every kind of antibody do have the variation in their constant region, but the variable region everybody must have, because it is the antibody, it has to recognize, and the recognition is through the
variable region. And you can see the cloning strategy by which we can produce the monoclonal antibodies. Previous strategy was a hybridoma technology. Hybridoma technology to produce the monoclonal antibody. And this is the recombinant DNA technology. Recombinant बड़ा charming word है, आप अक्सर use करते हो. Recombinant DNA पे काम कर रहे हैं. This is the recombinant DNA technology to produce the monoclonal antibody here. बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आ रही है आवाज। एक चीज के बारे में पूछना था, काइंडली उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। बोलिए। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में आप बता रहे थे, वो थोड़ा सा काइंडली उसको डिफरेंशिएट कर दें कि उसका किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट में क्या रोल होता है। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप डीएनए का सीक्वेंस देखते हैं ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। जब भी डीएनए का सीक्वेंस देखते हो एनसीबीआई पे कहीं पे भी पेज पे लिखा हो, वो 5 टू 3 प्राइम होता है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हो, जब भी प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हो, वो क्या होता है, वो एन टू सी टर्म लिखा जाता है, ठीक है। और कहीं लिखा हुआ है एफ सी जी टी पी, तो आपने समझ लेना एफ इज एट द एन टर्म, एफ इज एट द एन टर्म, एंड पी इज एट द प्रोलिन इज एट द सी टर्म, ठीक है। जब भी डीएनए का सीक्वेंस लिखा जाए तो आपने हमेशा समझना है कि दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज 5 प्राइम, प्राइम मैंने लिख दिया और ये 3 प्राइम है। हेलो, क्या हाल है बच्चों? Okay, so we can see here the DNA fragment, it is always written from 5 prime to 3 prime end, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल अगर प्रमोटर है, ये जो मैंने प्रमोटर बनाया, प्रमोटर को आमतौर पे ना मैं इस तरह का ना इस तरह का तीर के निशान से शो करता हूँ, ये जो प्रमोटर है, ठीक है। ये इसका डाउनस्ट्रीम होगा, प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम लगाएंगे हम क्या, कोडिंग सीक्वेंस, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वो इस तरफ होनी है, ठीक है, इस तरफ होनी है ट्रांसक्रिप्शन, इस तरफ होनी स्टार्ट। तो ये जो होगा ये स्टार्ट कोडान होगा। स्टार्ट कोडान हमेशा जो अटैच होता है किसके साथ होता है, स्टॉप कोडान के साथ होता है। स्टार्ट कोडान क्या होता है, एटीजी स्टार्ट कोडान होता है। क्या कोडान होता है स्टार्ट कोडान, एटीजी। और स्टॉप कोडान क्या होता है, टीजीए या टीएजी। स्टॉप कोडान एक से ज्यादा है, स्टार्ट कोडान एक ही है, एटीजी स्टार्ट कोडान, ठीक है। दैट इज अटैच्ड with the downstream of promoter and the coding sequence is downstream of promoter region. This is coding sequence, ये coding sequence मैंने बना रहा हूं, ये देखो ये coding sequence है। ज्यादा डेट तो नहीं होगा, समझ आ रहा है कि दोबारा बना दूं, चल रहा है पता? जी जी ठीक है सर, ठीक है। दिस इज कोडिंग सीक्वेंस दैट इज डाउनस्ट्रीम ऑफ दिस एरो, दिस बोल्ड एरो, दैट बोल्ड एरो इज प्रमोटर। मैं अपनी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल मैनुअल है, यहाँ पे जरा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने प्रमोटर को एरो नहीं बनाया, वरना मैं एरो बनाता होता हूँ इसको। अच्छा खैर, एरो ऑन द स्ट्रैंड, ठीक है, उसके बाहर नहीं। एक मिनट में फोन सुन लो। हाँ जी विकास, कहाँ पे हो? वालेकुम सलाम, आगे हो? न्यू बिल्डिंग में हो? बस ना मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं न्यू में आ जाता हूँ। अगर आप फ्री हो तो आप मेरे पास ओल्ड में आ जाओ, मैं इधर चेयरमैन ऑफिस में बैठा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। आप ओल्ड बिल्डिंग में आ जाओ, चेयरमैन ऑफिस में आ जाओ, बैठा हूँ, इधर ही मीटिंग करते हैं हम इंशाल्लाह। आ जाओ, चारों आ जाओ आप लोग। ओके, टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सॉरी ड्यूरिंग द क्लास। अब आपको समझ आ रही है? जी। तो मैंने आपको रिकम्बिनेंट का कोर्स नहीं पढ़ाया ना शायद, इसलिए आपको थोड़ा ये नया लगा। ये बड़ी मजे की चीज है रिकम्बिनेंट की। अच्छा, तो रिकम्बिनेंट में क्या है आपको पता होना चाहिए, जिस तरह कोई भी प्रोटीन बना सकते हो उसका कोडिंग सीक्वेंस देके, उसका कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस करवा के, ठीक है। और कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस कराने के लिए डेफिनेटली आपको प्रमोटर चाहिए होगा। तो इसी तरीके से जो एंटीबॉडीज हैं दे आर आल्सो आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी हैं, वो प्रोटीन इन नेचर है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर अलोंग विद सम डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, ठीक है, some glycosylation is also there. So disulfide bridges, these are the protein in nature. If we give the coding sequence of the antibody, definitely we can get the antibody, right? We do not need to go every time. We do not need to go every time for the hybridoma technology. Hybridoma technology is tough technology, मुश्किल है, इसके लिए skilled मैन पावर चाहिए, skilled बहुत ज्यादा। जबकि recombinant DNA टेक्नोलॉजी तो सबको बच्चों को आती है, समझने में आसान है, प्रिंसिपल में आसान है, परफॉर्म करने में आसान है, और इतनी महंगी भी नहीं है। जबकि hybridoma टेक्नोलॉजी महंगी है, मुश्किल है करनी। तो इसलिए रिकम्बिनेंट, आई एम मोर इंटरेस्टेड मेनी टाइम इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और हमने ये भी लास्ट टाइम देख लिया था कि मोनोक्लोनल हैज मेनी बेनिफिट्स ओवर द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का कुछ बेनिफिट रिसर्च में हो सकता है, वेस्टर्न ब्लॉट में हो सकता है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज ऑलवेज सुपीरियर, इज ऑलवेज यूज्ड ओनली एंड सोलली द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन द थेराप्यूटिक्स, स्पेशली थेराप्यूटिक्स, ठीक है। इवन इन द डायग्नोस्टिक में भी इसलिए यूज करते हैं मोनोक्लोनल, बिकॉज इट डज नॉट यूजुअली गिव द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। कौन? मोनोक्लोनल फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती,
ठीक है, काफी है ना, हमने एडवोकेसी की है मॉलिक्यूलर एंटीबॉडी की, क्योंकि इसकी हम अहमियत जानेंगे तो इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, हमें इसकी अहमियत का पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं चीजें। अच्छा जी, प्रमोटर 1 देख रहे हो, ग्रीन कलर में शो किया गया है, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। ओके गुड। प्रमोटर यस सर, आ रही है। ओके थैंक यू। प्रमोटर ग्रीन कलर में, प्रमोटर 1 ग्रीन कलर में शो किया गया, प्रमोटर 2 जो है येलो कलर में शो किया गया है। अब उन्होंने एक फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज की है, फैंटास्टिक स्ट्रेटजी यूज की है उन्होंने। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्लाज्मिड दे दिया है, मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट 1 अवेलेबल है। वी कैन इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट हियर। We should not say gene of interest here, we should say any of the coding sequence, ठीक है, any of the coding sequence we can introduce at the MCS1 multiple cloning site 1। MCS1 का क्या मतलब है, multiple cloning site, कोई भी कर सकते हैं। और एक उन्होंने यहाँ पे CH लिखा है, कांस्टेंट हैवी चेन गामा 1, कांस्टेंट हैवी चेन गामा 1, क्योंकि ये कांस्टेंट चेन है for the production of antibody and any antibody, this will be required, so they gave this heavy chain by themselves because this was the constant region. In the same way, downstream of promoter 2, they give the multiple cloning site 2 and they gave the constant light chain kappa. They gave the constant light chain kappa because heavy chain and light chain have different formats. We are utilizing here kappa that is present in human. We are using gamma 1 here that is present in human because we want to produce the human based monoclonal antibodies. That's why we selected the heavy chain gamma 1 and the light chain kappa. But we are only missing the variable region, the sequence of variable region. So we are going to introduce the sequence of variable region for the heavy chain on the multiple cloning site 1, मल्टीपल क्लोनिंग साइट 1। ठीक है, हमारे पास हैवी चेन का सीक्वेंस ये है, ये हमारे पास लाइट चेन का सीक्वेंस है, तो हमें इसी तरीके से लाइट चेन का जो कोडिंग सीक्वेंस है वो MCS2 पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि प्रोमोटर 1 जो है वो हैवी चेन के वेरिएबल रीजन को भी एक्सप्रेस करेगा जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और कांस्टेंट रीजन को भी एक्सप्रेस करेगा हैवी चेन के जो यहाँ के ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये मेजेंटा कलर है शायद। अच्छा, और इसी तरीके से ये जो है कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है किस चीज का जी, हैवी चेन का। तो क्या करना है, आपने 4-5 पैरामीटर डिजाइन करने हैं, मैं कुछ रेज कर रहा हूं, इट इज गेटिंग वेरी डर्टी एंड यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली। ये मैंने सारा रिमूव कर दिया आपके लिए। ठीक है, आई पिक पेन अगेन। तो हमने क्या करना है, हमने एक पैरामीटर यहाँ पे P1 डिजाइन करना है, एक P2 डिजाइन करना है, एक हमने जी असल में वी शुड डिस्टिंग्विश, यहाँ पे P3 P4 कर लो। वी शुड ऑलवेज डिस्टिंग्विश द प्राइमर्स, हमें डिस्टिंग्विश प्राइमर करने हैं। प्राइमर जो है ना, एक का सीक्वेंस दूसरे से डिफरेंट है तो वी शुड डिस्टिंग्विश। इसी तरीके से हम प्राइमर जो है ना यहाँ पे P3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन प्राइमर को डिजाइन करने का मकसद क्या है, टू पिक द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल हैवी चेन, टू पिक द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ठीक है, इन प्राइमर को डिजाइन करने का मकसद ये है। बट दीज प्राइमर्स डू हैव सम सीक्वेंस दैट इज टेकन समवेयर फ्रॉम द प्रमोटर इफ वी टॉक अबाउट द हैवी चेन। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये हैवी चेन एक्सप्रेस हो जाएगी, ये लाइट चेन सॉरी एक्सप्रेस नहीं, कॉपी हो जाएगी। वी कॉपी दिस सीक्वेंस बाय द, we amplify this sequence by the PCR and we utilize 1 2 3 4 5 6 7 8, we run 8 primers and 3 plasmids, we run 8 primers and 3 plasmids and we mix them in 1:1 ratio and we mix them in and we run the DPN1 treatment। तो जब हम इन सारे के सारे फ्रेगमेंट को जो कि सम ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन रखते हैं इकट्ठा पीसीआर में लगाएंगे, सो वी विल गेट वन फाइनल प्लाज्मिड ऑफ दिस काइंड। बट अलोंग विद दिस फाइनल प्लाज्मिड, दिस plasmid will also be in the PCR mixture and this plasmid will also be present in the not PCR mixture, PCR product, you can say final reaction. When the reaction is completed, these initial parent plasmid will also be present along with this final plasmid. So we treat the PCR product with DPN1. DPN1 is one enzyme that can degrade only the the methylated. DPN1 enzyme can degrade only the methylated plasmids, methylated. So
whatever is produced during the PCR is always unmethylated. So DPN1 will not degrade the newly synthesized plasmid through the PCR because PCR is producing unmethylated, but it will degrade all the methylated parent plasmids. So in this way, we will get only the newly synthesized PCR mediated amplified plasmid that will contain the promoter 1 with heavy chain variable and heavy chain constant, with promoter 2 light chain variable and light chain constant. When we express, because this plasmid is the eukaryotic expression plasmid, because this plasmid is the eukaryotic expression plasmid. So when we introduce this plasmid into the HEK293 T cells or the CHO cells, they produce this antibody. So in this way, by the recombinant DNA technology, this strategy has been taken by me from a published paper. So you can read this paper. Uh, Maybe some of the references are given at the end of the book chapter that I already provided you for the study. So CHO cell line is sometimes superior to HEK293 T cells because today many recombinant proteins are produced in the Chinese hamster ovary, CHO, Chinese hamster ovary cell line, because they have high proliferation and very high expression, the CHO cell line. Because this is not the human cell line, the animal cell line, if we want to produce some of the therapeutic antibody, we should use some human cell line, I guess, because some of the variation, some lipidation or glycosylation in the animal, you can say the mouse cell line may be introduced into the body that will awake uneven immune response when used as a therapeutic purpose in the humans. That's why I recommend to use to produce the monoclonal therapeutic antibodies in the human cell line if we want to use them for human therapeutics. So again, I brought something new for you. This is almost the end of the lecture, today's lecture. Some of the things were missing in the last lecture. That's why I repeated several things, and with some new things I'm sharing with you. So IgG antibody is present in following localities. And you can see IgA is the dimer, IgD is this one antibody, Ig is this antibody. IgG you can see is in this format, IgM is the pentameric antibody, IgM is the pentameric. I may ask the which of the antibody is dimeric, IgA, IgM or IgE. So you will say in the exam IgA is the dimeric antibody. So you can see once again here, so you should see skit in the mucosal. So these are the different characteristic of different antibodies. IgM has the heavy chain mu, IgG has gamma, okay, alpha IgA, epsilon IgE, IgD, delta. Delta heavy chain is present in the IgD antibody. And number of antigen binding, you can see the IgM can bind to the 10 antigens, and you can see dimeric can bind to the 4 antigen. Okay, some of the students are waiting for the acceptance, so let me accept them so that their attendance can be included. Okay, once again we are back here. Okay, some of the antibodies can cross the placenta. You can see only IgG antibody can cross placenta. Only IgG antibody can cross placenta. Okay. Okay, you can see only 2 antibodies can fix the complement system. In the complement system, in awakening the immune response, only 2 antibodies are important. Which one? IgM and IgG. In the next lecture of the complement fixation, we will see which antibodies and how they are acting to awake the response of complement proteins. They awake the response of complement proteins so that the immune response is initiated through the complement proteins. So these 2 antibodies are responsible for those things. And the main antibody, primary response, you can see these kind of things. You can check. And you can see this the table I copied for you. IgG antibody molecular weight, it has been written here. Normal serum level, how much it is present in the serum, how much is the half-life. If we see IgG1 has 23 days of half-life, 23 days. So the highest half-life is depicted by IgG1, 23 days, right?
and IgG2 also has 22, 23, IgG4 23, and IgM 5, and IgD. So the least half life is shown by the IgD antibody, least half life. Okay, bind to the FC sometime, FC region we will see. So that's all. तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है एंटीबॉडीज का ना, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमने 2 लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, हमने 2 लेक्चर में, हमारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, एक लेक्चर में भी पढ़ा जा सकता है चैप्टर। तो आपको आवाज आ रही बच्चों? जी आ रहे सर। अच्छा, तो आपने बुक चैप्टर जो मैंने आपको दिया है, आपने वहां से याद करना सारा।